Hello students, welcome to your channel Zevish English Classes. I hope you all are good, and in today's video lecture I have taken up this book Treasure Trove, which is from ICSE board for the students of 9th as well as 10th standard. And the poem that I have taken up today is the 8th poem, The Patriot, and it has been written by Robert Browning. Robert Browning is an English poet who belongs to the Victorian era, and Victorian era is supposed to be from 1837 to 1901. This poem ends on a positive note, and this poem is based on a very beautiful philosophy of Robert Browning. Actually, Robert Browning used to think or believe that we shouldn't expect anything ever from our fellow beings or from other human beings, but we should always make expectations from God, because it is eventually God who gives us reward for all kinds of deeds that we ever do in life. So it is always, a better idea to expect from God, because in that case we are sure that we will get rewarded. We will get to uh, enjoy the fruits of our deeds. But then, in case of our expectations from the human beings, it never comes out to be successful. And what happens to us as a result is just disappointment. So, here, very beautifully, the poet has brought out this philosophy, and on the basis of that thought of Robert Browning, he has ended this poem on a very positive or optimistic note. Now, what is that? Let us try to understand. And before I go ahead and explain this poem to you, I just want to tell you about this example, so that with the help of this illustration, you can understand this poem in a better way. See, here in this poem we've got a patriot. Patriot is somebody who loves his country a lot and can do anything for his country, can even die for his country. You can regard him as a soldier or something like that, just because he's always ready to sacrifice his life as well for the sake of his country. And such a person is called the patriot. Deshbhakt in Hindi we can say. So what happens? Let us take this example, like our cricketers are there. तो जब भी क्या होता है कि हमारे क्रिकेटर्स जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए, और वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली और वो जीत कर आते हैं. तो जब वो जीत कर आते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया और वो जीत करके आ रहे हैं, then the kind of excitement that we have got to receive them is really something which is commendable. And what happens कि वो क्रिकेटर्स जब लौटते हैं वापस अपने देश, तो उनको बहुत अच्छा वेलकम मिलता है. हर इंसान चाहता है कि उसको एक झलक मिल जाए, ऐसा लगता है कोई हीरो लौट रहा है, कोई बहुत बड़ी जंग लड़ करके. दिस इज द you can say temperament of people, that people appreciate their deeds a lot. They respect them, they love them, and it seems as if they are ready to give anything to those heroes for the kind of glory that they have brought to their nation. But then, let us think of a situation contrary to this, because it is merely a game, and the cricketers do not deliberately get defeated in any game, but then sometimes it may happen that they may not win the game. And let us consider that situation when they have lost the game. And when they come back after losing the game, the same crowd, the same people of India, same Indians, will not be giving them that love, that respect. Rather, even they will not leave them alone. You're right, it's okay if you have lost the game, you must be disheartened too. So let us leave you alone to tackle with that sadness. No. In that case, the same cricketers, जिनको एक साल पहले जब वो जीत कर लौटे थे तो बहुत प्यार और बहुत इज्जत मिल रही थी,
उन्हीं क्रिकेटर्स को 1 साल बाद अगर वो हार कर लौटे हैं, नेक्स्ट ईयर जब वो गेम हुआ, 1 साल पहले जब ये सब कुछ हुआ, वो जीत कर लौटे तो बहुत इज्जत मिली। 1 साल बाद जब दोबारा कोई गेम हुआ और उसमें वो हार कर आ रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि उनको अपना मुंह छुपाना पड़ता है। ऐसा लगता है वो चोरों की तरह भागते हैं, सो दैट दे डोंट हैव टू फेस पीपल, एंड इन केस दे आर they come in front, then they have to tackle it very badly, because लोग उन पर पत्थर तक मारने मारने लगते हैं, लोग उन पर अब्यूजेस थ्रो करने लगते हैं और बहुत गंदी तरह से उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो अब आप सोचो कि उन क्रिकेटर्स पर क्या गुजरती होगी उस टाइम पर, कि जब उनको ये लगता है कि मतलब they should not be feeling happy when they are being respected, when they are being loved, even then too उन्हें खुशी नहीं मिलती होगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर यही टाइम हमारा चेंज हो गया, यही कल हम हार कर लौटे या कुछ गलत समझ लिया हमारे लोगों ने, तो यही लोग जो आज बहुत प्यार बरसा रहे हैं, ये पत्थर भी बरसा सकते हैं। This is the uncertainty of life. There is no certainty, there is no surety that they will win the game every time. And under the circumstances of losing the game, they will have to face disrespect and so much of hatred. So this is the reality of life, and therefore, we can come to this conclusion as per the philosophy of Robert Browning, that we should not be expecting anything from people, neither something good nor bad. Instead of that, we should expect the rewards from God for whatever we do, good or bad. It will surely be rewarded, and we should expect that reward only from our God. And when we start expecting only from God, then all our complaints and disappointments and sadness comes to an end, and we tend to become more positive and happier, because we know that God is surely going to do justice with us, and therefore whatever we have reaped we will harvest in the same way. दैट मीन्स वहाँ पर हम जो एक्चुअल में करेंगे उसका हमें वही रिजल्ट मिलेगा. So let us come to this poem now, The Patriot. In this poem we will see, instead of the cricketers, there is a patriot. And this patriot is going to tell you a story about how he had been respected a lot, loved a lot, and welcomed in such a beautiful manner just a year ago. And on this very day, he's telling you that on this particular day itself, a beautiful welcome and a lot of love and respect was given to me. But it all happened a year before. And today, at present, the circumstances are completely contrary to all that. And today, on the very day, on the same day, but it has been a year, since then. And today, I am facing a lot of insult, a lot of disrespect, a lot of hatred. This is what this patriot is telling to the readers through this poem. And therefore, this poem is a dramatic monologue. Now, what is a dramatic monologue? Monologue is mono itself means single and log is a conversation. So, monologue means when there is just a single person who is speaking throughout the poem. And there is a single speaker in this poem who is a patriot himself. So, since there's just a single speaker in this poem, that is the patriot, and he has been telling his story from the beginning to the end of the poem, and the audience is considered as present but on a silent mode. In that case, a poem is said to be a dramatic monologue. So here, the patriot is a speaker in the poem, and he's a single speaker, and the audience is present, listening only on a very silent mode, and therefore it is called a dramatic monologue. Now let us start the poem and try to understand the story that the patriot has told to us in this poem. And the patriot will be telling us his story, in two situations.
So the poem will also be divided into situations. Like this entire poem is in 6 stanzas overall. So the first 3 stanzas will be telling us a different story, and the last 3 stanzas will be telling us a complete different story. And the two stories that are told by the Patriot are completely contrast in their nature. They are contrary to each other. They are opposite to each other, because the first story will be all about love and welcome and happiness, and another story will be all about hatred and disrespect and all, as I told you. So here we have to take that illustration and try to understand the poem. How, in the first 3 stanzas, the Patriot has described to you that particular day a year before, when he had come back as if from a war or somewhere, after gaining victory. This is what we have to regard or consider. Just because it is not very clearly mentioned here कि why, the reason is not given in this poem, कि क्यों उसको बहुत इज्जत मिली 1 साल पहले उस पर्टिकुलर दिन, और क्यों 1 साल बाद सेम डे को बहुत बेइज्जती मिली, it is not clear. But then what we have to understand, that he was a patriot and he must have done something good for his nation, for which he was given a lot of love and respect. But then after a year it happened that some sort of misunderstanding, the people must have undergone, and due to which they started hating this man, and then they abused him and threw stones at him, and everything they did, whatever they could do to show their hatred towards him. So this is how people reacted when they were under some sort of a misunderstanding about this patriot. And obviously, he must have felt very bad about it, so he has told it in this poem as his story. Let us start the poem now. It was roses, roses all the way. 1 साल पहले आज के इसी दिन पे जब वो लौटे थे, तो उनके रास्ते में फूलों को बिछा दिया गया था, रोजेस को, गुलाब बिछा दिए गए थे. With myrtle mixed in my path like mad. Myrtle is a kind of a plant. It's a green shrub, evergreen shrub, which in Hindi is called हिना और मेहंदी का जो पेड़ होता है. So that is myrtle, rosemary myrtle. So that myrtle was mixed. Rosemary myrtle is actually called mehendi, and here we are talking about that particular shrub. So उस shrub के leaves को और उसके अलावा roses को मिला करके, मतलब फूल और पत्तियां सब मिला करके उनके रास्ते में ऐसे बिछा दी गई थी. लाइक मैट का मतलब है इट लुक्ड टू बी सो क्रेजी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी किसी ने इतनी ज़्यादा अपने प्यार को और अपनी इज्जत को शो करने की कोशिश की है कि पागलों की तरह बस उसने पूरे सड़क पर फूल और पत्तियां बिछा दी हैं फॉर दैट मैन टू वॉक अपॉन, फॉर दैट पैट्रियट टू वॉक अपॉन. So which was showing, love and respect towards that patriot. So we have to understand the figures of speech as well. फर्स्ट लाइन में रोजेज रोजेज रिपीट हुआ है. इसका मतलब दोनों वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और रिपीट हो रहा है आर, और इस वजह से ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है अलिटरेशन. और दूसरी वाली लाइन में भी अलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मर्टल, मिक्स्ड और मैट, इन तीनों वर्ड्स में एक लेटर सेम है, फर्स्ट लेटर जो कि एम है, और एम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूसिंग लेटर है, इसीलिए इस लाइन में भी अलिटरेशन का इस्तेमाल हुआ है, विच इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. सो द हाउस रूफ सीम्ड टू हीव एंड स्वे. ऐसा लग रहा था जैसे लोग अपनी छतों पर इतना ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा हो गए, इतनी भीड़ जमा कर ली है लोगों ने छतों पर, कि ऐसा लग रहा है जैसे छत हिलना स्टार्ट हो चुकी है. इट बिगैन टू हीव, as if somebody was dragging it. It was so much overcrowded at that point of time. And sway means it seemed to be moving, forward and backward. Just because, it was so much overcrowded. So ऐसा लग रहा है कि जो छतें हैं लोगों की, जो घर की छतें हैं, वो इतना ज़्यादा लोग उस पर चढ़े हुए हैं, भीड़ है उस पर, कि ऐसा लग रहा है कि छत हिलने लगी है और गिरने वाली है. But this line is just showing to us
the madness of people and the way the crowd had gathered there just to witness this the the sight of this man, or you can say just to get a glimpse of this man, this patriot. The church spires flamed such flags they had, और spires is the tower, जो चर्च में जैसे जो चर्च की जो बिल्डिंग होती है, तो जिस तरीके से जो पिरामिडल स्ट्रक्चर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टावर, यू कैन से ऑल्सो. So the church spires refer to that pyramidal structure itself of the church. Flamed means उन्होंने चर्च स्पायर्स पे, चर्च के टावर्स पे, उस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर पे इस तरह के फ्लैग्स लगाए थे जो एकदम फ्लेम कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि देयर वर लॉट ऑफ लाइट्स देयर, सो दे वर फ्लेमिंग, दे वर ब्राइटेंड अप. ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं. दे वर एनलाइटेंड विद सच फ्लैग्स. अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, और ये सब कुछ हुआ था उसी पर्टिकुलर दिन, एक साल पहले. उसी पर्टिकुलर दिन का मतलब है क्योंकि पोएट जो है, सॉरी ये जो पैट्रियट है, ये नॉस्टैल्जिक है इस वक्त. नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पास्ट इवेंट्स के बारे में सोचना और बहुत ज़्यादा उन मेमोरीज़ को याद करना. तो इस वक्त वो अपने एक साल पहले की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, जो ये सब कुछ उसी दिन हुआ था जो आज का दिन है. मतलब आज इसी दिन ये सब कुछ हुआ था, लेकिन एक साल पहले. तो he is nostalgic and reminding himself of all those things that had taken place a year ago, आज ही के दिन, और इसीलिए on this very day लिखा है. लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो अभी तक के जो फर्स्ट 3 स्टैंजास हैं, ये फ्लैशबैक में है, क्योंकि इसमें जो पैट्रियट है वो नॉस्टैल्जिक है और वो पास्ट की बातें कर रहा है. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजास आएंगे, लास्ट 3 स्टैंजास, उसमें जो है वो प्रेजेंट की बातें कर रहा है, आज की, एक साल बाद की. सो नेक्स्ट स्टैंजा नाउ वी हैव टू गो अहेड विद. The air broke into a mist with bells, the old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk, mere noise ripples, but give me your son from yonder skies, they had answered, and afterward what else? Celebration का part music भी होता है, तो they were also ringing bells, and there was so much of noise of those bells that they seemed to be, misting the air as well. ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में एकदम मिक्स हो चुके हैं, और हवा को भी उन्होंने वेग कर दिया है, मिस्टी बना दिया है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट साउंड ऑफ द बेल्स, इतना ज़्यादा हर तरफ बेल रिंगिंग की साउंड सुनाई दे रही थी. द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, और ऐसा लग रहा था कि वो साउंड इको हो रहा है उन ओल्ड एंशियंट वॉल्स में से, उन भीड़ के भीड़ के साथ. वो जो भीड़ चिल्ला रही थी और अपलॉट कर रही थी, बेसिकली अप्रिशिएट कर रही थी इतना ज़्यादा पैट्रियट को. तो ये उस दिन की बात है, एक साल पहले की, जिस दिन उनको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा था. लोग पागल हो रहे थे, उनके फ़ैन बन चुके थे, चिल्ला रहे थे, चीयर अप कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे. और पैट्रियट का कहना है कि उस दिन तो शायद अगर हम लोगों से ये भी कह देते, गुड फोक मीन्स गुड पीपल, mere noise ripples, I am not very much liking this noise alone, but I want something else from you, and that is the sun from your sky. Then I am very sure that people that day would have even given me the sun from the sky, and then would have said to me, what else do you want from us? They were getting so crazy after me on that particular day due to my victory. So he's saying कि अगर हमने उस दिन उनसे सूरज भी मांगा होता कि अपनी स्काई से लेकर के आ जाओ, तो वो लेकर के आ जाते. तो here we have to see again. See, first of all, let me remind this to you that I have already told you about alliteration, कि एक ही लाइन में जब एक से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स हों जिनका फर्स्ट लेटर सेम हो, वो रिपीट हो रहा हो, और वो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाला लेटर हो, इन दैट केस हम उसे कहते हैं
एक फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। तो अगर आप देखो तो इस सेकेंड स्टैंजा की सेकेंड लाइन में भी उस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्राउड एंड क्राइज वर्ड जो दो है, इसमें सी का रेपिटेशन है और सी एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूसिंग लेटर है और रिपीट हो रहा है सिंगल लाइन में दो वर्ड्स में, और इसीलिए दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज कॉल्ड एलिटरेशन। देन वी कम हियर एंड वी सी कि किस तरह से यहाँ पर पोइट ने पैट्रियट ने आपको ये बताया कि एक्चुअली पोइट इज सेइंग ऑल दिस थ्रू अ कैरेक्टर, and that's why the poem was dramatic monologue, I told you. So poet is not directly saying anything, but he's saying through a character who is a patriot in the poem. So the patriot is saying कि हमें इसका आसमान से सूरज चाहिए, and which is symbolic, which is a metaphor here, because exactly तो जाहिर है कोई किसी से सूरज नहीं मांगता, but what he means to convey is कि हम चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ मांग लेते, चाहे सूरज ही क्यों ना मांग लेते, मतलब उनके आसमान का सूरज मतलब उनकी फैमिली की सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो उनके पास है, एंड दैट टू दे वुड हैव गिवन मी, एंड आफ्टर गिविंग दैट टू मी दे वुड हैव आस्क्ड कि व्हाट डू यू वांट नाउ। तो वो हमसे हमें सूरज देने के बाद पूछते अब तुम्हें क्या चाहिए, तो इट इज़ रेफरिंग टू दैट। देन वी कम ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। Alack, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do, have I left undone, and you see my harvest what I reap. This very day now a year is done. Okay, so he's saying, but alas, alack is an exclamatory word which means alas, which means I'm so sad about all this today, because although I could ask them, he just had given you an example कि अगर हमने उनसे सूरज भी मांगा होता तो शायद वो सूरज भी ले आते और फिर पूछते अब और क्या चाहिए। But he's saying कि as a matter of fact I hadn't asked them for the sun, rather I myself had jumped up at the sun so that I could fetch the sun for them, for my nation, for my those people. So what he means to say over here is कि sun, as I told you, is symbolic, is metaphorical here. Metaphor is again a figure of speech, so metaphor is also a figure of speech which is used in this poem. So he just means to say कि अगर sun जैसी कोई चीज़ जो कि एक पावर को सिंबलाइज करती है या बहुत वैल्यूएबल होने को सिंबलाइज करती है, अगर हमने उनसे वो भी मांगा होता तो वो शायद दे देते, लेकिन उन्होंने थर्ड स्टैंजा में कहा कि हमने उनसे नहीं मांगा, बल्कि हुआ ये कि हम खुद उनके लिए सन ले आए, हमने खुद अपने आप को रिस्क में डाला, एंड आई ट्राई टू गेट even the sun for them. That means I wanted to make them the most powerful. I fetched them the most valuable thing. That's what I did, and I brought that for them so that they could keep it. तो यहाँ पर इसका मतलब एग्जैक्टली ये तो है नहीं कि वो सूरज ही उठा लाया और लाके उन्होंने दे दिया उसको। He means to say कि हमने उन्हें वो ला कर दिया जो इतना आसान नहीं था। It was equivalent to fetching a sun. It is hyperbole, no? कि हम सूरज तोड़कर उनके लिए ले आए, which simply means to convey that what I did for them was really not an easy task, but I took up a difficult task as well, just for the sake of those people, because I loved my nation, and today also I love my nation, but I'm being misunderstood. So he's saying, not man could do have I left undone. Not man means no man, nothing that man can do, nothing. Not means nothing over here, zero. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान कर सकता है और हमने ना की हो। हर वो चीज़ जो एक इंसान कर सकता है वो सब हमने किया है फॉर दीज पीपल एंड फॉर माई कंट्री। और देखो ना आज इस सब का बदला हमें क्या मिल रहा है। And you see my harvest is my result, my repercussion, output, what I'm getting as a reward, what I reap. So and today you see this is the time when you feel the most disheartened and disappointed कि जब आपने बहुत कुछ अच्छा किया है लेकिन आपके साथ रिजल्ट में अच्छा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि देखो हमने क्या किया था, क्या कुछ नहीं किया था, और उसके बदले आज हमें क्या मिल रहा है। एंड
ये सब कुछ आज से 1 साल पहले की ही बात है. राइट नाउ अ ईयर इज रन. उन सारे दिनों को अब 1 साल हो चुका है. 1 साल पहले हमें क्या मिल रहा था और आज 1 साल बाद क्या मिल रहा है. जबकि हमने इन लोगों के साथ बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ किया. आई ट्राई टू डू माई बेस्ट. लेकिन देखो आज हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है इन लोगों से आज 1 साल बाद. तो वो 1 साल बाद आज क्या रिवॉर्ड मिल रहा है वो अब हम फोर्थ स्टैंजा में देखेंगे. देयर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ. तो अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो लोग अपने छतों पर हुआ करते थे. लेकिन अगर हम आज देखें तो कोई भी अपने छतों पर नहीं है. तो जब लोग अपने छतों पर हुआ करते थे और छतों को ऐसे लगता था कि हिला देते थे. राइट इतना ज़्यादा वो छत पर इकट्ठा हो जाते थे, एक्यूमुलेट हो जाते थे. तो उस केस में हम एक और फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं, personification. Just because the way the house roofs seemed to be moving was indicating a movement that is generally made by a human being or a person, and that's why it could be said a figure of speech called personification. बट अगर हम आज की बात करें तो आज छतों पर कोई भी नहीं है. Just a palsied few at the window said. Palsied actually refers to those people जिनको ये बीमारी हो गई है, जो palsied हो गए हैं. That means जो paralyzed हैं, जो मूव नहीं कर सकते अपनी जगह पे, जिनको बिठा दिया उनके घर वालों ने विंडो पे और वहाँ बैठे रहना उनकी मजबूरी है. Since they cannot move from there, they cannot go anywhere else. So they are the only people who are still sitting at the windows and looking at me outside. But then there is nobody else. Like a year before, on this very day, when the crowd used to be gathered, accumulated all around, people were all on their house roofs and all, so that they could just get a glimpse of mine and how I was given such a beautiful welcome. But today, there's nobody. For the best of the sight is all allowed at the shambles gate. क्योंकि I'm very sure they must be gathered today at the shambles gate. क्योंकि आज उनको लग रहा होगा कि जो सबसे अच्छा नज़ारा है, सबसे बेस्ट साइट है, वो कहाँ मिलेगी? shambles gate पे. Now shambles gate. Shamble is actually a slaughterhouse. And here the shambles gate is referring to that particular place, that platform where a public execution is performed. That means जहाँ पर criminals को publicly मारा जाता था, फांसी दी जाती थी आप कह सकते हो. और बजाय फांसी देने के एग्जैक्टली ऐसा होता था कि एक्स से उनके हेड को कट ऑफ किया जाता था. तो whether it is hanging or cutting off the head with the help of an axe, that is just a way to punish a criminal publicly and to show to the public that he was a criminal and he was punished for his misdeeds. So उसको लग रहा है कि आज लोग शैम्बल्स गेट पे इकट्ठा होंगे और better yet by the very scaffold's foot I chew. I true means I believe, I think, I am very sure about it. He means to convey here. He is saying कि बल्कि शैम्बल्स गेट पे भी नहीं, बल्कि उसके भी आगे. Scaffold actually is a wooden raised platform जिस पर सर को कलम किया जाता था, जिस पर हेड को रख करके और एक्स से कट ऑफ किया जाता था. एंड उन्होंने कहा कि वो लोग स्कैफोल्ड के पास ही खड़े होंगे, उस रेस्ड वुडन प्लेटफॉर्म के पास खड़े होंगे लोग, ताकि वो बहुत करीब से मेरे उस एग्जीक्यूशन के नज़ारे को देख पाएँ, उस सीन को देख पाएँ. आई ट्रू मीन्स आई थिंक, आई बिलीव. आई गो इन द रेन एंड मोर दैन नीड्स a rope cuts both my wrists behind, and I think by the feel my forehead bleeds, for they fling whoever has a mind stones at me for my year's misdeeds. Then he is saying, I go in the rain, and rain here is symbolic of the bad days of life or the hardship or the adversity, more than needs. He is saying, I don't even need to be treated in such a bad way as I am actually being treated.
He's saying a rope cuts both my wrists behind. मेरा हाथ पीछे बंधा है रस्सी से और ऐसा लग रहा है मेरे हाथ कटे जा रहे हैं, मेरी रिस्ट कटी जा रही है, मेरी कलाई कट रही है, एकदम इतना कस के बांधा हुआ है. एंड आई थिंक बाय द फील और क्योंकि मेरे हाथ तो बंधे हैं तो आई कैन नॉट टच माई फोरहेड बट आई कैन स्टिल फील कि जैसे मेरे फोरहेड से माथे से ब्लीडिंग हो रही है. फॉर मीन्स बिकॉज दे फ्लिंग मीन्स थ्रो. Whoever has a mind means whoever is big enough to think, to understand or to find out कि क्या चल रहा है. अगर कोई थोड़ा सा भी, अगर कोई बड़ा है, एडल्ट है या फिर समझ रहा है चीज़ों को, तो उन सब के दिमाग में एक बात है कि आई एम अ क्रिमिनल, आई एम टू बी पनिश्ड एंड दैट आई एम somebody who is a villain. तो इसलिए वो सारे लोग इकट्ठा हैं और वो सब मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं. तो आई एम बीइंग कैरीड टू द स्कैफोल्ड, वो तो एक बात है. मेरे हाथ पीछे बंधे हैं, बहुत ख़राब तरह से बिहेव किया जा रहा है, वो सब तो एक बात है. बट उसके अलावा जो आसपास लोग हैं भी, तो वो इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी पिटी और सिंपैथी, दे आर रादर थ्रोइंग स्टोन्स एट मी. और वो अगर थोड़े से भी इस एज के हैं, इतने बड़े हैं, that they can understand कि something is happening here and that I should be considered as a villain. So they are considering me as a villain and they are doing that kind of a treatment to me. Stones at me for my years mistakes. तो वो सब मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं मेरे सालों की गलतियों के लिए, जो उनको लग रहा है कि हमने गलत किया. And सालों की इसलिए because it was just a year before that I had a different treatment, and today, after a year, on the very same day, I am getting a completely different treatment from the people around me. Thus I entered and thus I go. In triumphs people have dropped down the dead, paid by the word what dost thou owe. Me God might question now instead. It is God shall repay, I'm safer so. So in this stanza, the Patriot is saying कि हम किस तरह से यहाँ पर आए थे और आज कैसे जा रहे हैं यहाँ से. That means कि सेम स्ट्रीट से एक टाइम था कि कैसे गुजर रहे थे इज्जत के साथ और आज कैसे जा रहे हैं. In times people have dropped down dead, paid by the word what dost thou owe me. Alright, so it happens very often that people remain under the impression that they are getting victorious this way, but then in the process of causing injury to others, they themselves get injured. Like here at this point of time as well, this crowd who is trying to throw stones at me, getting so much accumulated and almost falling upon each other, they are hurting themselves as well. Then he is thinking about that time. ये एक बहुत important line है थर्ड स्टैंजा में, जिसमें उन्होंने कहा है not man could do have I left undone. That means nothing man could do have I left undone. कुछ भी ऐसा जो एक इंसान जनरली नहीं कर सकता था, वो सब कुछ हमने किया है. हमने कुछ भी अंडर नहीं छोड़ा, लेकिन उसका आज हमें ये रिवॉर्ड मिल रहा है कि आई एम बीइंग टेकन टू द स्कैफोल्ड. क्यों? स्कैफोल्ड पे पब्लिकली एग्जीक्यूट करने के लिए, टू बी हैंग्ड और टू बी किल्ड. सो ही इज सेइंग कि जब दुनिया हमें ये सज़ा दे देगी, देन शायद गॉड हमसे ये पूछें कि दुनिया तो तुम्हें सज़ा दे ही चुकी है, नाउ व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी. नाउ इंस्टेड इट इज़ गॉड शैल रिपे, आई एम सेफर सो. और अगर गॉड ने ये पूछा कि नाउ एज यू आर ऑलरेडी पेड बाय द वर्ड एंड इट्स टाइम to ask from me what you want, then I will say कि I just want God to repay, and I know कि it's time that God shall repay. That means these two lines of this last two lines of the poem are actually very optimistic, very positive, because these two lines are giving peace to the Patriot. See, at this point of time, a person would really feel the worst कि ये दुनिया हमें समझ नहीं रही, मेरे साथ गलत कर रही है. As a patriot is saying कि जो कोई नहीं कर सकता था इन लोगों के लिए, वो हमने किया. Not man could do have I left undone. So उसके बाद भी अगर ये लोग मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही, बट फिर भी यहाँ पर पोएम का जो एंड है वो नेगेटिव नोट पे नहीं हो रहा है, पॉजिटिव नोट पे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, लोगों ने जो करना है वो करें, हमें एक्सपेक्टेशन है गॉड से। तो गॉड ने अगर ये पूछा कि दुनिया तो तुम्हें सज़ा दे चुकी है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तो हमें बस, मेरा जवाब ये होगा कि आई वॉन्ट द रियल रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड, क्योंकि आई बिलीव इन गॉड एंड आई एम श्योर कि गॉड इज़ देयर फॉर जस्टिस। एंड इसीलिए we should not expect anything from our fellow beings, from other human beings. We should expect only from God, because God shall repay, and He shall repay fruitfully with justice. And that's why I find myself safer now. The Patriot is saying कि अच्छा है ये लोग हमें मारने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद I will be at a safer place where justice is done, where I will be getting the true rewards and the fruitful rewards for my deeds. And I believe in God, and I believe that, and I expect from God. And this is how this poem comes to an end on a very positive or optimistic note, and which is also reflecting very well the philosophical thought of Robert Browning, that God is there and this is something that satisfies him. As on page 31 in the box, it is said by Robert Browning, God is in his heaven and all is right with the world. Since God is there in the heaven, everything is, going on very well. Just because God is driving things, and since God is driving them, so things are going on completely in harmony, and He is satisfied with that. So the poem comes to an end, and I hope you understood the poem. Thank you so much for watching, and please subscribe to the channel.